हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। सो इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स अगर तुम्हारा पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल फॉर्म में हो तो उस पे पहले हम लोग चेक करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है तो उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड। उसका थोड़ा सा कुछ टॉपिक जान लेते हैं कैसे क्या करते हैं। सो अगर तुमको इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स फॉर्म में, वेयर एफ एक्स और जी एक्स तुम्हारा पोलिनोमियल है। सो फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू चेक इज अगर तुम्हारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर चेक करना है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर तुम्हारा ग्रेटर दैन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज डिवाइड इट, डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड जो छोटे क्लास में सीखा होगा। ओके, so first thing you will divide it, and then once you get in the form of degree of numerator is less than degree of denominator, क्योंकि whenever you divide कोई भी numerator divided by denominator करते हो तो you will get the quotient plus remainder divided by the denominator, वो remain this one polynomial chapters में किया होगा। So now जैसे हम लोग का डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आएगा, लाइक इन दिस केस दिस विल हैपन कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। वी विल नेक्स्ट चेक इज डिनोमिनेटर इज फैक्टराइजेबल और नॉट। अगर फैक्टराइजेबल हुआ तो दैट मीन्स दैट डिनोमिनेटर विच इज जी एक्स उसको हम लोग ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी ऐसा या फिर कुछ और फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो तब तुम्हारा ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स क्या हो जाएगा? वी कैन एक्चुअली राइट दिस वन एज सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द factors, first factor another constant divided by another factor, like we will learn the procedure how to do this one. Okay, so we can integrate this, so this will become quite simple and easy to integrate. Okay, so this is the overall concept. So whenever you have polynomial divided by polynomial, तुमको क्या करना है? First of all, what you are going to check is the degree of numerator should be greater than should be less than degree of denominator. लेकिन अगर degree of numerator is greater than degree of denominator हुआ तो what we are going to do is first we are going to perform division using the long division method. Okay, and then उसके बाद जब हो जाएगा तो फर्स्ट देन नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू चेक इज वेदर हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं। अगर फैक्टराइज हो सकता है तो देन वी विल प्रोसीड विद द ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, अब व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन एंड हाउ डू वी गेट दिस वन, ये तो हम लोग सीखेंगे। ओके, नाउ इन नॉर्मल कुछ भी नंबर्स ले लो, जैसे कि 3/4 है। 3/4 को अगर हम लोग दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, लाइक आई कैन राइट दिस वन एज 1/2 प्लस 1/4. This will give you 3/4. So this is like you are splitting a fraction into two simpler fractions. Okay, so वही करना है यहाँ पे भी हम लोग को कि we will make it into a simpler fraction so that we can integrate it easily. Alright, so let's do it by some examples. Let me start with one easy example. Okay, so here already it is given that the denominator is in the factorized form. You have to integrate this one. So first of all what we are going to do is we will assume this x by x plus 2 into 3x minus 2x is equals to a by x plus 2 plus b by 3 minus 2x, where a and b are constants. So after taking LCM what you will get is this left hand side, and on the right hand side once you take LCM is x plus 2 into 3x minus 2x. So your numerator will become a into 3 minus 2x plus b into x plus 2. So we can cancel the denominators. So you are getting
x is equals to a into 3 minus 2x plus b into x plus 2. So now we need to get the values of a and b. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि we are going to choose the different values of x. So उसके लिए we will check this denominator यहाँ पे. So for what value of x this denominator will become 0. So x plus 2 will become 0 when x is equals to minus 2, right? So that one we are going to put it here. So for x is equals to minus 2, इस expression में we will put where x is equals to minus 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा minus 2, then a into 3 minus 2 times of minus 2, right? और ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So what we are getting, minus 2 is equals to 7 times of a. So a will be equals to minus 2 by 7. Alright. Now next what we are going to do is we will choose another value of x. So for that one what we are going to see, ये वाला denominator 0 होना चाहिए. ठीक है. So 3 minus 2x अगर 0 बनाना है तो what we are supposed to put the value of x, 3 by 2. So for x is equals to 3 by 2, again put it in this expression, we are going to get 3 by 2 is equals to, this term will vanish, so it will be 0 plus b into 3 by 2 plus 2. So we are getting 3 by 2 is equals to b into 7 by 2. So this 2 we can cancel it one times, so b is equals to 3 by 7. So we got the values of a and b. Alright, abhi we will come to this original integration. So this I we can write it as integration. Now you see carefully this part we have taken it as this, right? So let us write that one. So integration of a by x plus 2 is what we have got, the value of a minus 2 by 7, minus 2 by 7 divided by x plus 2. फिर next term is b by 3 minus 2x. So what we have got the value of b, that is 3 by 7. So 3 by 7 divided by 3 minus 2x whole dx. So if I split this one, this is the constant term, so I can take it out outside. So minus 2 by 7 integration of 1 by x plus 2 dx. Another term also we can take out that 3 by 7 common. So what we are left with, 1 by 3 minus 2x dx. Now you must have done integration of 1 by x dx is equals to log of x plus c. Now integration को हम लोग कभी भी like कोई भी random form में we cannot do. Okay, standard form में होना चाहिए, तभी we can use the formula of integration. So इसका another standard form is you can replace it by any linear function of x, that x can be replaced by any linear function of x and we can use the same formula. Okay, so in place of x अगर तुम्हारे पास integration of 1 by ax plus b है, so the integration of this one will be equals to log of ax plus b. Okay, provided you will divide it by the coefficient of x. What is the coefficient of x? A. So either 1 by a you write and then plus c. So same thing, this is a linear function, so the integration of this one will be equals to minus 2 by 7 log of mod of x plus 2. Since the coefficient of x is 1, so no need to divide it by anything. Okay, then another term 3 by 7, the denominator is 3 minus 2x, so integration of this one will be log of mod of 3 minus 2x. Now here the coefficient of x is minus 2, so you just multiply that minus 2 in the denominator of the coefficient. Okay, so plus c. So overall your answer is minus 2 by 7 log of x plus 2 minus 3 by 14 log of 3 minus 2x plus c, where c is the constant of integration. Alright, so
overall from the beginning, anything which is in the factorized form, like not anything, the denominator if it is in the factorized form, we will express it as the partial fractions. हम लोग का काम है वो a और b को फाइंड करना है. वो a और b फाइंड करने के बाद उसको ये एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट. ऑलराइट. Okay. Okay, we will move on to the next question then.